Okay, let's begin. चलें जी. Just a moment. चीज़ रह गई है. Okay. Okay, so let's recap Poisson distribution before we go on and solve more questions. इसमें start करते हैं. हम बिल्कुल स्क्रैच से देख लेते हैं चीज़ों को. सही है. हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया था. हमने कहा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जहाँ पे जो है वो रैंडम इवेंट्स अकर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल. ओके. जैसे एम्बुलेंसेस का कॉल आना, द नंबर ऑफ एरर्स ऑन अ पेज ऑफ टाइपिंग एंड सो ऑन. तो वो रैंडमली आ रहे होते हैं. उनको कोई फिक्स नहीं होता कि आप ट्रायल्स कर रहे हैं और ट्रायल्स के बाद जो है वो रिजल्ट आ रहा है. So what was this about? This was about random events occurring during a given interval. अगर आपको वो एवरेज पता हो कि कितने ऑन एवरेज आकर करते हैं तो आप फिर प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं. उस एवरेज को जो है वो हम लैम्डा कहते थे. ओके. और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r इज e पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा पावर r ओवर r factorial where r is from 0 to infinity. Okay, this was about amoebas in a 10 ml. तो 10 ml जो था वो हमारा इंटरवल था. सही है. हमने शॉर्टकट्स देख लिए थे कि जीरो और वन के जो होते हैं वो शॉर्टकट्स होते हैं कि जीरो और वन जो है वो आपको डायरेक्टली याद हो तो ज़्यादा बेहतर होता है. ओके. देन दिस वाज अबाउट एरर्स ऑन अ पेज. हमने ये करके देखा था. फिर हमने कहा था कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन जो है वो सेम इंटरवल के बारे में ही आपसे पूछ रहा हो. अगर आपका इंटरवल चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपका लैम्डा चेंज हो जाएगा. एंड दैट्स अबाउट प्रोपोर्शंस एंड नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड यू कैन प्रॉब्ली हैंडल दैट ऑन योर ओन. ओके. फिर we looked at this question again. I was changing intervals. थोड़ी सी complicated language भी आ रही थी हमारे पास वो हमें manage करनी of course. Okay. कहीं कहीं हमें lambda भी unknown अब मिला था तो हमने lambda भी find किया था. फिर ये एक practical application में आपको inventory management की दिखाई थी कि भाई कितनी inventory रखनी चाहिए so that you don't have to refuse customers coming into your shop for buying fans in that case. Okay. Whoever that huge fan question is, I'm pretty sure you are now satisfied. Okay. Then this was another question. Conditions याद होनी चाहिए. सही है. We will have more questions. Then there was sum of independent variables. यहाँ पे तो अभी two radioactive active substances emit का था. सही है. एक और question जो पहले I think it's going to come up later on in your homework questions is about कि एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे दो साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं. एक लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, एक राइट हैंड साइड से आ रही हैं और वो जो है वो सिग्नल पे पहुंच रही हैं. तो सिग्नल पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है वो उसने कैलकुलेट करवाई हुई थी कि अगर इंडिविजुअली सिर्फ एक साइड से ट्रैफिक आ रहा है तो क्या होगा, दो साइड से ट्रैफिक आ रहा है तो क्या होगा, what is the probability of a traffic jam and all those things were there. Okay, so whenever you have sum of independent Poisson variables कि आप जो है वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे जो है वो कस्टमर्स को चीज़ों को ऐड करना चाह रहे हो तो हम कहते हैं कि उनके लैम्डास भी जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं. Okay, then this was about checkout counters. I gave you that example about a supermarket. हमने बात की थी एंड हमने जो है वो Poisson variables को ऐड किया था. फिर हमने क्या पढ़ा था कि जिस तरह बायनॉमियल में फार्मूलाज होते हैं एन पी और एन पी क्यू. तो ये बायनॉमियल में होते थे. लिख देता हूँ यहाँ पे. एन पी मीन का होता था और एन पी क्यू जो होता था वो वेरिएंस का होता था. ओके. ये हमने पढ़ा था. अब तो हमने पढ़ा कि भाई पॉइजन में जो होता है वो मीन भी लैम्डा होता है और वेरिएंस भी लैम्डा होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडेज क्लास. ओके. मोड मैंने कहा था याद कर लें. आई नेवर सीन अ मोड क्वेश्चन ऑन द एग्जाम बट यू शुड रिमेंबर दीज कि भाई लैम्डा इंटीजर हो तो मोड दो होते हैं और लैम्डा जो है वो इंटीजर ना हो तो
मोड जो होता है उससे कम हो जाता है। फिर हमने कहा कि कभी कभार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो इनकन्वीनियंट हो जाती है और उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाती है विदाउट मतलब विदाउट अ technology enabled device. But so then what you can do is a better approximation of the binomial distribution is to use the Poisson distribution. In what cases, अब दो कन्वर्जन्स हैं, एक जो आपने पहले पढ़ी थी बाइनोमियल टू नॉर्मल की, उसमें कंडीशंस अलग थी, एनपी और एनक्यू की थी कि ग्रेटर देन 5 होने चाहिए दोनों इन ऑर्डर फॉर अ बाइनोमियल टू बी कन्वर्टेड टू अ नॉर्मल। उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी करेक्शंस आती थी, वो कंटिन्यूटी करेक्शंस आने के बाद जो है वो कंक्लूड होता था। सही, अगर जो है वो आपके पास एन लार्ज हो और पी स्मॉल हो, सही, व्हेन एन इज लार्ज एंड पी स्मॉल, देन you don't convert into a binomial into a normal, but you convert binomial into a Poisson। सही है, वही रूल्स दोबारा से अप्लाई होते हैं, सिवाय कंटिन्यूटी करेक्शन के सब कुछ होगा। और उसी तरह जो है वो आपने कन्वर्ट करके देखा था। अभी कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दोबारा दिखा भी दूंगा। सही है, आई डिड अ फ्यू क्वेश्चंस विद यू in that class. One thing that was left in this chapter was the normal approximation to the Poisson distribution। सही है कि कभी कभार Poisson itself is not possible। Okay, so a better approximation then is to use the normal distribution to solve for the Poisson probability। कब ऐसा होता है, यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है, when lambda is large, say lambda is greater than 15, that is your criteria of lambda being large, the normal distribution can be used as an approximation where x follows the normal distribution with lambda and lambda। Why is this lambda and lambda? बिकॉज मीन भी लैम्डा होता है और वेरिएंस भी लैम्डा होता है जब हम किसी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं। अभी हमने पिछले पेजेस पे देखा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी लैम्डा था और वेरिएंस भी लैम्डा ही था। As with the normal approximation to the binomial distribution, a continuity correction is needed since you are using a continuous distribution as an approximation to a discrete one. Okay, we'll talk about this in a bit। उसने radioactive disintegration gives counts that follow Poisson distribution with a mean count of 25 per second। यानी अभी एक Poisson distribution है जिसका lambda कितना है 25। Is it large? Yes, my criteria fits कि lambda is greater than 15, therefore 25 is greater than 15 और lambda जो है वो large हो गया। It's better to use what? It's better to use normal distribution। Okay, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसे यूज करनी है, लेट्स सी। वो कह रहे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहे, वो कह रहे हैं द काउंट इज बिटवीन 23 and 27 inclusive। ओके, सो आई वांट दिस टू बी बिटवीन 23 and 27 inclusive। अब मुझे पता है इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो इसका म्यू भी 25 हो जाएगा और इसका सिग्मा स्क्वायर भी जो होगा वो 25 हो जाएगा। नाउ अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉल कराऊंगा। इफ यू डोंट रिमेंबर द एंटायर थिंग प्लीज आस्क। If you still think you need more help, you should go back and watch the lectures on normal distribution from S1। Okay, हम क्या करते थे, पहले कंटिन्यूटी करेक्शन करते थे। कंटिन्यूटी करेक्शन करने के दो तरीके थे। इफ यू डोंट रिमेंबर द रूल्स यू कैन गो बैक एंड रिवाइज द रूल्स। अभी मैं आपको रूल्स के बगैर वाला बता रहा हूँ कि आपको नंबर्स क्या चाहिए, 23, 24, 25, 26 एंड 27। दीज आर द नंबर्स दैट यू वांट। तो आप क्या करते हैं कि लोएस्ट नंबर में से 23.5 कर देते हैं और हाईएस्ट नंबर में 27.5 कर देते हैं और आप कहते हैं कि एक्स जो होना चाहिए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रॉक्सीमेट हो रहा है तो वो बिटवीन 23.5 एंड 27.5 होना चाहिए। यानी इस रेंज में जब नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाएगा तो वो बिटवीन 23 एंड 20, सॉरी 23 से पहले 22.5 है, 22.5 माय बैड। 22.5 से बड़े नंबर्स होने चाहिए और 27.5 से 22.5 से लेकर 27.5 तक नंबर्स होने चाहिए। तो इन नंबर्स का राउंड ऑफ किया जाएगा तो ये 23 और 27 के बीच में आएंगे। अभी मैंने इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन कर दिया। The next thing that you did for converting into a normal distribution was to subtract the mean and divide by the standard deviation। और फिर ये क्या हो जाता था, ये z हो जाता था। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा -0.5 और 0.5। सही है,
फिर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स होते थे। क्या रूल्स होते थे? एक ये रूल होता था। क्या? 25 पर सेकंड का एवरेज है, मतलब मल्टीप्लाई पर 60 नहीं करेंगे? इन 1 सेकेंड ही तो कुछ है। अच्छा नहीं, उसने 1 सेकंड का। ओके, तो सही, सॉरी। इसका रूल होता था 5 of b - 5 of a। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 of 0.5 - 5 of -0.5। Okay, so what is 5 of 0.5? I can use my calculator to do this, या आपके पास टेबल है। वैसे आपकी किताबों के एंड पे जो है वो एक टेबल अटैच हुआ हुआ है। ओके, सो आई विल यूज माय, मुझे 0.5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी। Okay, I'm getting 0.691, so this is 0.691। ओके, नेगेटिव को कैसे सिंप्लीफाई करते थे? इसको पहले लिखते थे 1 - 5 of 0.5। so I get 0.691 minus 1 minus 0.691। Okay, I should have read this to 4 decimal places. Let's read that to 4 decimal places. 6915।0.383। Okay, so that is the entire process of converting a Poisson distribution to a normal distribution. Okay, I hope this was clear to everybody. So yeah, I am going to move quickly in this class today. If you find it difficult to write it down right now, then write it down later on. Okay, I don't want to spend time today waiting for you to copy questions. Okay, you can do that later on. Okay, at a petrol station, cars arrive independently and at random times at constant average rates of 8 cars per hour traveling east and 5 cars per hour traveling west. This is the example that I was talking about in the earlier part of the class. Okay, find the probability that in a quarter hour period, so I'm talking about 1/4 of an hour, so I'll have to change the lambdas. One or more car traveling east and one or more cars traveling west will arrive. So I want east and west separately. I don't want them together. So what I'm going to do is I'm going to calculate east separately. So east lambda is 8 into 1/4, which is 2, and west lambda for the quarter hour period, 5 into 1/4, which is 1.25. Okay, find the probability that in a quarter hour period, one more cars traveling east, one more cars traveling west will arrive. So and का है तो multiply करना पड़ेगा probability, one or more. So E is greater than 1, greater than or equals to 1, and west is also greater than or equals to 1. Okay, combined जो भी आ रही हो, we'll talk about that once I come up with the probability. So this gives me 1 minus probability of 0 minus 1 मल्टीप्लाई किया। quarter hour period. Okay,
Okay, so 1 minus e power minus 2 into 1 minus e power minus 1. I'm getting 0.6169, so I'm going to round that off to 0.617. Okay, that's the first question. Okay, part B. A total of two or more cars will arrive. Now I want total. So what should I have? I should have total lambda. What will be total lambda? Total lambda will be the sum of the two. 2 plus 1.25. I have 3.25. So probability of two or more. I'm going to say this is 1 minus probability of 0 minus probability of 1. So 1 minus e power minus 3.25 minus 3.25 e power minus 3.25. I'm getting 0.835. Okay, part 2 भी हो गया, part B भी हो गया. Now I want you to look at part 2. बेटा total of two or more cars हो गई ना, तो अब मैं ईस्ट और वेस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा. I'm just adding up the totals. Okay, okay. Part 2. Find the approximate probability. Now it says approximate. What does that tell you? कि आपने कोई approximation use करनी है. That in a 12-hour period, let's see what the lambda becomes. A total of two or more. तो ये quarter का lambda था. सही है. Lambda for 1 hour कितना है? Lambda for 1 hour जो है वो 8 plus 5 18 है. Okay. So lambda for 12 hours क्या हो जाएगा? Lambda for 12 hours will be 12 into 13. This is 156, which is a very big lambda. हमने तो कहा था लैम्डा ग्रेटर देन 15 हो तो भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है. तो लैम्डा तो 156 हो गया है. तो अब क्या करना है? टोटल ऑफ मोर देन 175 कार्स. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अप्रोक्सीमेशन यूज करनी पड़ेगी मोर देन 175 के लिए. नाउ इस पे पहले क्या लगेगी? इस पे पहले कंटिन्यूटी करेक्शन लगेगी. कैन समवन टेल मी व्हाट द कंटिन्यूटी करेक्शन फॉर दिस वन विल बी? क्या हो जाएगी? ये के 176 हाँ 77 ये सारे होगा. हाँ, तो बाउंड 175.5. पहला नंबर जो है दावर 176 चाहिए ना, तो 175.5 से स्टार्ट करेंगे. ओके, फिर इसका म्यू भी लैम्डा होगा और इसका वेरिएंस भी लैम्डा होगा. सो लैम्डा प्रोबेबिलिटी ऑफ z, सर एक बार ये कंटिन्यूस डायरेक्शन करते ही फिर क्योंकि हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में आ रहे होते थे. जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होती है. गाड़ी डेसिमल में तो नहीं आ सकती ना. ओके, लेट्स कंप्यूट दिस. 175.5. Okay,
तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 5 1.56, 1.561 निकाल लेते हैं फिर हम। ओके, दैट शुड बी माय फाइनल आंसर। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो प्लीज पूछें, एंड if you still think you need a full revision, then please go back and watch the normal distribution videos. Okay, we're moving on to the next question now. This is also a past paper question. Please look at this carefully. It says a dressmaker makes dresses for easy fit fashions. Two more questions to go. Okay. A dressmaker makes dresses for easy fit fashions. Each dress requires 2.5 meters square of material. Faults occur randomly in the interval at an average rate of 4.8 per 20 meter square. तो मुझे एक lambda दिया गया है 4.8 का. Okay. Find the probability that a randomly chosen dress contains at least two faults. Okay. अब ड्रेस में कितना चाहिए, 2.5 मीटर स्क्वायर चाहिए, ये तो 20 मीटर स्क्वायर का है, तो मुझे लैम्डा को एडजस्ट करना पड़ेगा। लैम्डा को एडजस्ट कैसे करूंगा कि 4.8 जो है वो 20 में आते हैं, तो 2.5 में कितने आएंगे, सो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू एक्स। तो माई न्यू लैम्डा इज 4.8, 4.8 इंटू 2.5 divided by 20, 0.6. 0.6. So what probability am I asking you to calculate then? I am asking you to calculate the probability of x greater than or equals to 2, at least two faults. Okay, so 1 minus probability of 0 minus probability of 1, so 1 minus probability of 0 is e power minus lambda e power minus lambda. Point 0.1219. Okay, so there's a 12% chance that a dress will contain at least two faults. Okay, ये जो आपने पहले पार्ट में फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन की तरह वापस आते हैं। बेटा वो 20 मीटर स्क्वायर का लैम्डा है, एक ड्रेस जो है वो 2.5 मीटर स्क्वायर का होता है, तो मैंने लैम्डा को यूनिट इंटरवल पर एडजस्ट किया। ओके, फिर आगे बढ़े. नाउ द क्वेश्चन गेट्स इंटरेस्टिंग फ्रॉम देयर, इट sort of deviates from Poisson a little bit and then come backs to Poisson later on. Each dress has a belt attached to it to make an outfit. Independently of faults in the material, the probability that a belt is faulty is 0.03. उसने कोई एवरेज इंटरवल नहीं बताया, उसने डायरेक्ट बता दिया कि बेल्ट फॉल्टी होने की 0.3 है, तो नॉट फॉल्टी की क्या हो जाएगी, 2.9. 0.97. Find the probability that in an outfit neither the dress nor its belt is faulty. Okay, neither the dress nor its belt is faulty. So what do I want? इन द ड्रेस के फॉल्टी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेल्ट के नॉट फॉल्टी होने। हाँ, सही है, गुड. तो बेल्ट नॉट फॉल्टी तो तुम मुझे बता सकते हो ना, यू जस्ट टोल्ड मी दैट 0.97. अच्छा, ड्रेस कब नॉट फॉल्टी होता है, कि जब उसमें जीरो फॉल्ट्स हो. सही है, ऊपर वाली ई कंटिन्यू. पावर माइनस 0. ओके, गुड. e power minus 0.6.
So I get what? 0.532. Okay. सर आपने एक बताया था कि जब मल्टीप्लाई और प्लस प्रोबेबिलिटीज कब होती हैं कि जब दो इवेंट्स साथ में हो, क्या पता। क्या? गो अगेन। आपने क्या बताया था कि जब ये प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई और प्लस कब होती हैं। और होता है तो प्लस होते नहीं, बताया था कि जब दो इवेंट सीक्वेंस में हो तो क्या होता है, और जब दो हैं। इवेंट्स देखो, जब तक डिफरेंस जब में हो। तक इवेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है ना वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अभी हम ड्रेस नॉट, मतलब उसको क्या चाहिए कि ड्रेस नॉट फॉल्टी हो और बेल्ट भी नॉट फॉल्टी हो, तो जब तक ड्रेस और बेल्ट दोनों ना अकोमोडेट हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहूंगा। और अगर दो अलग अलग इवेंट्स की बात हो रही है जिसको दोनों फिर वो प्लस कंप्लीट हो होता जाए तो दोनों, और दोनों साथ अगर हो। है। The dress, फिर the dress has at least one fault and its belt is faulty. Dress has at least one fault, so dress की probability है greater than or equals to 1 की, और belt की क्या है? Belt faulty है, तो belt faulty is 0.03, और dress faulty क्या हो जाएगा? 1 minus probability of 0. Okay, so 1 minus e power minus 0.6. तो इसमें थोड़े से ट्री डायग्राम्स सॉर्ट ऑफ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, सो आपको जो है वो सारी S1 की इंफॉर्मेशन जो है वो टेस्ट की जा सकती है कहीं ना कहीं. You should be able to think about all these complications in the answer. Okay, तो अब देखो देखो दोनों चीजें फॉल्टी होने का कितना कम चांस है, 0.0135. सही है. और नॉट फॉल्टी होने का 50% चांस है, यानी एक एक चीज फॉल्टी होने का ज्यादा चांस है, फॉर एग्जाम्पल. इन एनी केस, सही है, दैट्स व्हाट द numbers are coming up. The dressmaker attaches 300 randomly chosen belts to 300 randomly chosen dresses. An outfit is in which the dress has at least one fault and its belt is faulty is rejected. यानी ये जो आपने निकाले, ये रिजेक्टेड वाले निकाले, सो ये रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है जो अभी आपने कैलकुलेट की कि ड्रेस में एटलीस्ट वन फॉल्ट आ गया और बेल्ट में है भी, बेल्ट भी फॉल्टी हो गया. यूज अ suitable approximation to find the probability that fewer than 3 outfits are rejected. So now how many outfits do you have? How many outfits do you have? 300। 300 है. और रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.0135, right? Does everybody agree with this up till here? देन आउटपुट इन व्हिच द ड्रेस इज एटलीस्ट वन पॉइंट एंड क्वालिटी की लेंगे ना, हाँ, ये जो थर्ड पार्ट पार्ट 3. हाँ, यही लिया ना मैंने. ओके, अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दैट फ्यूअर देन 3 आउटफिट्स आर रिजेक्टेड, फ्यूअर देन 3. अब वैसे तो मैं इस पे, अब ये n दिया हुआ है तो n का मतलब क्या होता है? कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है ये? n का मतलब कौन सी? बायनोमियल है, लेकिन n इतना लार्ज हो तो बायनोमियल तो नहीं लगाते रजा. हम क्या लगाएंगे? हम जो है वो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे. नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले इस पे कंटिन्यूटी करेक्शन लगा लो. पॉइजन नहीं लगा दी तो क्या? हाँ. 50 से ज्यादा होता है। हाँ, और 50 से ज्यादा, n जो है वो 1% से कम, ये 1% से ज्यादा है ना? नहीं सॉरी, 10% से कम होता था. इस पे अच्छा, सॉरी, हाँ सही है, यू आर राइट. आई वुड रादर, अच्छा ये बायनॉमियल है, बायनॉमियल टू पॉइजन कर लेना चाहिए. सही है, यू आर राइट. इस पे नॉर्मल लग नहीं पाएगी. यू आर राइट. ओके, सो n इज लार्ज एंड p इज स्मॉल. ओके, बायनॉमियल टू नॉर्मल जो होते हैं ना वो S2 में बहुत कम ही होता है. यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट इज वेल. ओके, सो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? n इज लार्ज एंड p इज स्मॉल, तो मुझे np चाहिए होगा लैम्डा निकालने के लिए. np कितना बन रहा है? 0.013। इंटू 300, 4.0. मुझे किस किस की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे कंटिन्यूटी करेक्शन की जरूरत नहीं होती. बायनॉमियल टू पॉइजन में कंटिन्यूटी करेक्शन की जरूरत नहीं होती. हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 एंड 2 निकाल लेंगे. ठीक है, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा. आई नो माई कैलकुलेटर कैन डू दिस. आई एम गोइंग टू गो टू माई कैलकुलेटर एंड आस्क इट टू डू
the Poisson CD. I just want to the key probability, and my lambda is 4.05. 4.04. 0.231. Okay, clear so far? Any questions? Okay, दावर पहले बोल देते हैं बेटा पार्ट 3 the dress has at least one fault तो d greater than or equals to 1 into belt faulty देखो इवेंट पूरा करना है ना मुझे ओके अब दावर डिस्कनेक्ट हुआ है तो you can go back and watch it from the stream. This is streaming on YouTube. You can watch it from there. थोड़ा सा लंबा है इसलिए और ये मीटिंग का टाइम जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. I don't have a I have some Zoom का issue right now, so I haven't installed the premium version. Okay. Okay. Um, let's quickly look at this last one in the next 3.5 minutes. That's when the meeting ends. You can I will give you a 10-minute break and then we can join again. अभी 1:45 हो जाएंगे हम 2 बजे दोबारा join करेंगे. Okay. The number of calls received per 5 minute on at a large call center has a Poisson distribution with mean lambda if more than with lambda is greater than 30. So I'm telling you uh, that is there. If more than 55 calls are received in a 5 minute period, this call center is overloaded. Okay, so more than 55 पे overload हो जाता है. It has been found that the probability of being overloaded during a randomly chosen 5 minute period is 0.01. Okay, use the normal approximation to the Poisson distribution to obtain a quadratic equation in root lambda and hence find the value of lambda. Very complicated question. Let's try to do it. So I'm going to say that I don't know lambda, but I know that the probability of more than 55 calls in a 5 minute period makes it overloaded, and overloaded की probability जो है वो 0.01 है. Now I can't really go on and use the Poisson distribution, so I'm going to say that I'll first do continuity correction in order to convert it to normal. Okay, so ये हो जाएगा x is greater than 55.5. एंड देन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट टू z. मेरा म्यू भी लैम्डा होगा और मेरा सिग्मा स्क्वायर भी लैम्डा होगा. ओके, so 55 minus lambda over root of lambda is 0.01. So 1 minus phi of 55.5 minus lambda over root lambda equals to 0.01. 1 minus 0.01 equals to phi of 55 minus lambda over root of lambda. Okay, so this becomes 0.99, and I'm going to do phi inverse of 0.99, 55 minus lambda over root lambda. Okay, so let's quickly do Poisson phi inverse normal. I want the area to be 0.99. Okay, I'm going to execute quickly. 2.326, 55 minus lambda. Okay, into root lambda. So I have a quadratic equation in root lambda. That's what the question was asking me. What am I going to do? I'm going to square both sides in order to solve this. So I'm going to square and square, and I'm going to say that uh, 2.326 squared 5.4103. Okay, and I think the timer is going to run out, so हम जो है वो इसको break के बाद करते हैं. Okay.
ओके, सो 5.554,103 लैम्डा और 55 का स्क्वायर होता है 3025 minus 110 lambda plus lambda square, so ये बन गया lambda square minus 115.4103 lambda plus 3025. Let's see if this works. Okay, so lambda is coming out as 75, 40. So it says lambda is, and hence find the value of lambda. Can someone check if I've done a calculation mistake somewhere? Ali, can नहीं you? यार सही रहती है। मैं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कर लेता हाँ, मैंने इसकी मार्किंग स्कीम खोल के देखनी पड़ेगी कि इसमें वैल्यू क्या आ रही है. November 1573 should do. हूँ। 75.16 कुछ आ रही है और 40.24 आ रही है। हाँ, ऐसे आ रही है मेरी भी. ज़्यादा तो नए. मैं ये कह रहा था कि क्लास एंड होने से पहले कि जैसे इसका है ना 5 मिनट पीरियड के अंदर हमें लैम्बडा हमारा जो है कुछ 30 से बड़ा है, कुछ 55 है सॉरी। तो उसने बोला कि तो अगर हम इसको इंटरवल को छोटा कर दें तो हमारा लैम्बडा भी हमारी 15 से नीचे आ जाएगा, तो फिर हम उसको यूज करके लेकिन बाकी सारे काम। फिर बात ये है कि ओवरलोडेड कैसे, तुम ओवरलोडेड 5 मिनट के इंटरवल पे होता है, ओवरलोडेड 1 मिनट के इंटरवल पे तो नहीं हो सकता. दैट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू, राइट? तो हम उसको 1 मिनट का निकाल के मल्टीप्लाई बाय करके 5 कर देंगे, मतलब उसको मल्टीप्लाई बाय पावर 5 कर देंगे। नहीं, नहीं कर सकते. आई विल हैव टू चेक कि इसमें एक आंसर डिस्कार्ड क्यों हो रहा है. हमने कंटिन्यूटी करेक्शन की थी ना, दिस इज 55.5. मैंने मिस्टेक भी किया ना, कोई 55.5 लिखा हुआ है, मैंने 55.5 नहीं किया था. ओके, रूट लैम्डा पॉजिटिव रखा हुआ है. I'll check back and I'll check again and see कि उसमें क्या डिस्कार्ड होना है. I'll have to pay attention to this properly. Okay. अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं the next chapter, and that is, सही आंसर सही है ना? दोनों अभी इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है, दोनों सही नहीं है, बिकॉज मार्किंग स्कीम में एक है एंड आई हैव टू चेक कि क्यों एक है, क्या लॉजिक से एक बन रहा है वो सिर्फ. ओके. वो फिर उसको क्योंकि रूट रिमूव हुआ है ना, तो आई हैव टू चेक कि भाई इस पॉइंट पे जो है ना, कौन से आंसर्स दोनों वैलिड आ रहे हैं.
अच्छा हाँ, यहाँ पे डाल के चेक करोगे तो पता चलेगा कि डाल के चेक कर सकते हैं ना। हाँ, इधर ही इंसर्ट करके चेक करोगे तो पता चल जाएगा, ये राइट। ओके। इधर या इधर ये 1 - लैम्डा इससे और ऊपर वन कहीं भी माइनस कर लो, 5.5 इधर नहीं कर सकते। इससे ऊपर कहीं भी कर लो, नीचे नहीं कर सकते इसके। ओके। अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक क्लास चल रही है उससे पहले यूजुअली खत्म, वैसे तो खत्म हो जाएगा। और फिर आप मुझे बताइएगा कि we'll stop at a certain point. Please do this homework. I will expect you to complete this by next week. और ये 2 चैप्टर हो जाएंगे तो फिर मैं एक टेस्ट भी लूंगा। ओके, स्टार्टिंग ऑफ विद लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी वो बेसिक आइडिया आएगा जो हमने पहले जो है वो एएस में भी पढ़ा था, जहाँ मैं आपको कोडिंग ऑफ डेटा सिखाता था, जहाँ पे मैं मीन वगैरह को एडजस्ट करता था। सही। ओके। So I'll start off the story from there and see how much of it I can tell you today, and then we'll do the rest of it in the next class. पहले ये कह रहे हैं linear combination of variables, the expectation and variance of a linear function of a random variable. Okay, so let's say मैंने अभी आपका जो है ना वो फॉर एग्जांपल अभी भी टेस्ट लिया, और वो मैंने 40 मार्क्स का आपको एक टेस्ट बना के दिया था। ओके। तो स्कूल ने मुझे कहा कि जो उन्होंने वो बनाया हुआ है, और लेट्स से मीन जो आया ना अभी आपका 40 मार्क्स में से मीन आया लेट्स से 25। ओके। और स्कूल वालों ने मुझे कहा कि द instrument that they've created on their system has a total of 50 marks, 40 मार्क्स का टेस्ट नहीं, या 50 मार्क्स का टेस्ट दे दें। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं सबके मार्क्स को स्केल करता और जो है ना उस हिसाब से कर देता, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा मीन भी नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको जो है वो 10 एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता हूँ फॉर योर क्लास वर्क परफॉर्मेंस, वट एवर द केस में भी। सही है, तो मैंने जो है वो सबको एवरी वन गेट्स +10। ओके, सो व्हाट इज द न्यू मीन देन? न्यू मीन भी क्या हो जाएगा, सबके अगर +10 हो जाए 35 हो जाएगा। सही है, ये हमने पिछले साल भी कहानी सुनी हुई है। तो ये यहाँ पे क्या कहता है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, यानी y एक वेरिएबल है जो x से डिराइव हो रहा है। कैसे डिराइव हो रहा है, हर वैल्यू में जो है वो आप प्लस बी कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगी, सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी हो जाएगी। सही है, यानी मीन ऑफ y विल बी जस्ट मीन ऑफ x प्लस वट एवर द नंबर इज बीइंग एडेड टुगेदर। ओके, बट मीन सेम होता है। एक्सपेक्टेशन और मीन सेम होता है। ओके। Okay, but let's say the standard deviation right now was 5 marks, यानी बच्चे जो है वो उनके मार्क्स जो है वो 25 में +5 करके जो है वो डिविएशन सी बन रही थी एक। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो एक पूरी कहानी खुल जाएगी उसके पीछे, बट आई एम जस्ट सेइंग स्टैंडर्ड डिविएशन जो थी वो 5 मार्क्स की थी। सही। अब लेट्स से अली के जो है वो अली के क्लास का मीन 25 था, अली के जो है वो 35 आए हुए थे पहले। तो अली तुम्हारे कितने हो जाएंगे, अगर मैं सबको 10 ऐड करके दे रहा हूँ तो तुम्हारे भी जो होंगे वो 10 ऐड हो जाएंगे। तो तुम्हारे पुराने मार्क्स क्या थे, अलीज ओल्ड मार्क्स फॉर 35 एंड अलीज न्यू मार्क्स आर 45। हाउ फार वर यू अवे फ्रॉम द मीन, 35 था, द मीन जो था वो 25 था, तो यू वर 10 अवे, एंड बाद में 35 हो गया तो भी तुम 10 अवे हो। सही है, why, because that's what I've done to the distribution. So I can say that the variance, your position hasn't changed, therefore the variance hasn't changed। Okay, the variance is still the same, that the variance of y is equals to variance of x plus b। यानी हमें पता चला कि हर वैल्यू में अगर एड सब्ट्रैक्ट सेम नंबर कर दिया जाए तो वेरिएंस जो होता है वो चेंज नहीं होता। ओके, वेरिएंस जो होता है वो चेंज नहीं होता। ओके, ऑन द अदर हैंड मैं जो है वो क्या करता, एक और ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं जो है वो उसको स्केल कर देता। अब स्केल करने से क्या होता, स्केल करना मुझे अगर पड़ता तो डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 50 करना पड़ता, विच मीन्स दैट हर नंबर को जो है एवरीबडी इज मार्क्स would get multiplied by 50 over 40 और 1.25। सही है? यानी अली को अगर पहले जो है वो 35 मिले हुए थे तो वो 35 इंटू 1.25 करके उसके नए मार्क्स आ रहे होंगे। पुराना मीन अब
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर पुराना मीन आपको पता है कि ओल्ड मीन वाज 25, व्हाट वुड बी द न्यू मीन? दैट वुड आल्सो बी 1.25 into 25. कितना बन जाएगा 1.25 into 25? मैंने कैलकुलेटर डाल दिया। 31.25। 31.25। राइट। ओके, सो डब्ल्यू जो है वो 31, उसका न्यू मीन जो हो जाएगा वो 31.25 हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट, तो इसने यही बताया कि अगर कोई चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होती है तो वो मीन में भी जो है वो आपको मल्टीप्लाई हुई हुई नजर आती है। ये सारी समरी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रहा। सही है। अच्छा, फिर जो है वो वेरिएंस की बात करते हैं। अब वेरिएंस को देखना क्या होता है। ओके, अलीज ओल्ड मार्क्स वर 35, अलीज न्यू मार्क्स, Ali's new marks are 35 into 1.25. So what do I get? 43.7. Okay. Now how far was Ali पहले? 35 minus 25, 10 का डिस्टेंस था। अब कितना दूर है Ali? 43.75 minus 31.25. Okay. Do you understand the calculations? 12.25। 12.5. 12.5। ओके, तो इट्स गॉटन मल्टीप्लाइड, वेरिएंस भी जो है वो किसी से मल्टीप्लाई हुआ है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई हुआ है, वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है। अभी ये तुम्हारे सामने डेविएशन नजर आ रही है, इसलिए इतना क्लियर कट नहीं नजर आ रहा होगा, बट यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांजिशन है वो क्या है कि बेसिकली 1.25 स्क्वायर से तुम्हारा वेरिएंस मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब अभी इसके मैं नंबर्स आपके सामने क्यों नहीं डिस्प्ले कर सकता, क्योंकि जो है वो एक बंदे से वेरिएंस की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अगर पूरी क्लास का डेटा होगा तो मैं आपको वेरिएंस की कैलकुलेशन जो है वो बोर्ड पे करके दिखा सकता हूँ। सही है, but you should take my word for it that whenever you multiply everybody's marks by a certain number, the variance gets multiplied with the square of that number. क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको इम्पैक्ट सही नजर आ रहा होता है, वेरिएंस जो होता है वो एक इंटरमीडिएट कैलकुलेशन होती है, वेरिएंस की कोई अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं होती। सो वेरिएंस डज नॉट गेट multiplied with just 1.25, it gets multiplied with 1.25 squared for that matter. सर ये जो Okay, 2.5 पे डिफरेंस है ये इन दोनों में ये क्या, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है ना? कोई कोई मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है, सिर्फ नहीं, ये 2.5 का नहीं है। 12.5 जो नहीं है ये देखो, पहले 10 स्टैंडर्ड डिवीजन था, अब 12.5 डिवीजन है ना? तो डिविएशन ये नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, तुम्हारी डिविएशन है। डिवीजन सही सही है, है। तो ये जो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है ये कोई ना कोई 1.25 स्क्वायर का होगा कुछ मल्टीप्लाई। ऐसा ही डिफरेंस आ रहा है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ एक्चुअली क्या। तुम 10 स्क्वायर कर लो और 12.5। दोनों मेथड जो है कन्वर्जन के अंदर डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या मतलब कन्वर्जेंट है? आपने दोनों मेथड आपने कहा था ना कि एक तो मैं क्या कहते हैं वैसे कन्वर्ट कर दूंगा, एक में आपने बोला रैंडम। नहीं देखो, स्कूल के लिए तो इम्पैक्ट सही आ रहा है, स्कूल को मसला नहीं हो रहा, स्कूल तो एडजस्ट कर लेगा। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशंस में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ओके, जो बिहाइंड द सीन्स कैलकुलेशंस हो रही हैं उसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा मीन और वेरिएंस में। ओके, सर क्यों आ रहा है? होता है डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो दो अलग अलग वो है ना। अब तुम अली के मार्क्स ही देख लो, अली के मार्क्स कितना चेंज हो गए। पहले उसको 45 मिल गए, जब उसको कितने मिले? 43.75। तो अली कौन सा प्रेफर करेगा? अली पहले वाला मेथड प्रेफर करेगा, उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उसका फायदा है। ओके, और तुम्हारे मार्क्स, लेट से मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स जो है वो मीन से नीचे आए हुए होते, 25 की जगह। या अगर ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता ना तो फिर अली कहता नहीं सर ये वाला मेथड लगाएं वो वाला ना लगाएं। ओके,
सो डिफरेंसेस आते हैं कैलकुलेशन नंबर्स में, डिफरेंसेस तो आएंगे, जाहिर सी बात है, दो अलग अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कंक्लूजन सेम निकल रहा है दोनों का, ये भी बातें आगे आएंगी। देयर विल बी मोर टू दिस लेटर ऑन। ओके, यस सॉलिड, स्ट्रीमिंग राइट नाउ। ओके, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई वेरिएबल एक्स है जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें बी ऐड करते हैं, तो उसके मीन को क्या हो जाएगा, उसका मीन भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेरिएंस निकालने जाते हैं तो इस प्लस बी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर का इम्पैक्ट होगा। सही है, ये इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ए पार्ट वन। तो इसका न्यू मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा 2 टाइम्स 7 प्लस 5, 19। वेरिएंस क्या हो जाएगा बताओ, 2 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस 0, कुछ भी ऐड नहीं होगा, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो बन जाएगा 12। तो द न्यू वेरिएंस इज 12 इफ यू ट्रांसफॉर्म ऑल द वेरिएबल्स। कि मैंने कहा कि भाई आप सब अपने मार्क्स को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें प्लस 5 कर दें। भाई आप लोगों के मार्क्स बहुत कम आए थे तो मैं आपको जो है वो बहुत सारे ग्रेस मार्क्स दे रहा हूँ, इसमें डबल करके और प्लस 5 करके और मार्क्स दे रहा हूँ। ओके, सर इसकी तो मीन जो समझ आ गई, वेरिएंस में क्या किया है? बेटा मैं कह रहा हूँ वेरिएंस किसी फैक्टर से चेंज हो रहा है ना, वेरिएंस पहले तो चेंज नहीं हुआ, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो वेरिएंस चेंज नहीं हुआ। तो ये जब मैंने मल्टीप्लिकेशन की तो तुम्हें नजर आ रहा है ना कि तुम्हारा भी डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया मीन से। पहले तुम 10 के डिस्टेंस पे थे, अब तुम 12.5 के डिस्टेंस पे हो, सही है। यानी तुम्हारी डिविएशन भी बढ़ गई है, हालांकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुई है। ओके, बट बिकॉज हर बंदे के मार्क्स की मल्टीप्लिकेशन हुई है, तुम्हारी सबकी डिविएशंस चेंज हो गई हैं। ये आपने 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू मैंने 3। ये रूल फॉलो किया है, और पुराना वेरिएंस 3 दिया हुआ है और पुराना मीन जो है वो 7 दिया हुआ है। अच्छा, ये +5 भी तो हो रहा है। इसमें हम्म। वेरिएंस में देखो प्लस बी को इग्नोर करते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं आता। ओके, ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। It says it costs $35 to hire a car for one day and there's a mileage charge of 20 cents per mile. The distance traveled in a day has expectation, यानी expectation of distance कितनी है 150, and standard deviation of distance कितनी है 18 miles। मैं variance of distance लिख रहा हूँ क्योंकि standard deviation लिखना मुश्किल होती है, 18 square है। सही, find the expectation and standard deviation of the cost per day। cost कैसे निकलेगी इसमें, cost का function क्या बनेगा बताओ। इब्राहिम साहब बाद में पूछेगा। इस कॉस्ट का फंक्शन बनाना है मुझे, क्या मैं कह सकता हूँ इट्स गोइंग टू बी 0.20 d प्लस 35। ओके, एवरीबडी एग्रीज विद दैट, 0.20 पर माइल एंड प्लस 35 हो जाएगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 0.2 d प्लस 35 क्या बनेगी, तो आप मुझे बताएंगे कि सर 0.2 इंटू 150 प्लस 35। सही है। ओके, व्हाट डज दैट गिव मी। सर आजाद वापस नहीं क्या हुआ है? मैंने कॉस्ट का फंक्शन बनाया है बेटा, देखो ऊपर इन्फॉर्मेशन से। इन डिस्टेंस भी होगा, यानी कॉस्ट तो फिर यहाँ लगाएंगे तो वही एक्स्ट्रा। हाँ, और वेरिएंस ऑफ 0.2 d प्लस 35, ये बनेगा 0.2 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर, प्लस 35 से कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। कॉस्ट और सेम ही होगी हर वक्त। क्या मतलब, कि अगर 150 माइल्स चलाया है, उसकी कॉस्ट भी सेम आ रही है और उसकी मीन भी सेम आ कॉस्ट भी सेम आ रही है और मीन भी सेम आ रही है, इसका क्या मतलब है। रही है। मतलब यहाँ
मीन अलग होता है और आपका डिस्टेंस थोड़ा अलग होना चाहिए ना, जो आपका टोटल कॉस्ट आ रही है हाँ तो तुम क्यों कह आगे? हर हर डेटा के लिए। लेकिन ये तो इधर तो हम जो भी डिस्टेंस लगाएंगे, कॉस्ट और उसकी एक्सपेक्टेशन। नहीं, एक्सपेक्टेशन डिस्टेंस की सेम नहीं आ सकती भाई। एक्सपेक्टेशन तो ओवरऑल डेटा सेट की होती है ना, एक वैल्यू की थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन हम जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेंगे तो कॉस्ट भी वही हो जाएगी और एक्सपेक्टेशन भी वही हो जाएगी। देखो, अब तुम्हें डिस्टेंस बदल के कॉस्ट निकालनी है तो तुम इस फंक्शन से निकालोगे, इधर से नहीं निकालोगे। लेकिन हम इस फंक्शन से निकाल के एक्स देखो देखो, मैंने एक्सपेक्टेशन तो स्टैब्लिश कर दिया है ना, कि मैं पूरा महीना जो है ना चलाता रहा तो मुझे पता चला 150 माइल्स जो है ना वो मेरी एवरेज पर डे जो है 150 माइल्स पर डे में ट्रैवल करता हूँ। सही है। सही है। अब अगले महीने में तुम चलेगा तो पिछले महीने के एवरेज तो चेंज नहीं हो जाएगी उससे। ये तो उसने पिछले महीने की एवरेज बताई है तुम्हें। हाँ, तुम अगले महीने अब जो भी काम करना है, मैं तो तुम्हें एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल के बता रहा हूँ बेस्ड ऑन योर रनिंग ऑफ द व्हीकल। अब तुम एक्सपेक्ट करोगे अगले महीने में भी तुम्हें $65 जो है ना वो खर्चा आएगा। यानी मैंने एक डेटा से distance निकाला, अब उस हाँ, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। बिल्कुल सही है। ओके, okay, let's look at this. It says the test scores have means 54 and variance 144. The scores are scaled using the formula y equals to a plus bx, where a and b are constant. The scale scores y have mean 50 and variance 100. So expectation of y जो है वो 50 है और expectation और variance of y जो है वो 100 है। उसने कहा find the values of a and b। अच्छा, ओके, तो आई नो दैट y कैसे निकला है, y इज a प्लस बी एक्स। अच्छा, और ऊपर और भी डेटा था ना, सॉरी, और भी डेटा था। एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी दी हुई थी 54 और वेरिएंस ऑफ x भी दी हुई थी 144। मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ओके, मुझे पता है कि फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम बिफोर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड a प्लस बी टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मीन भी मल्टीप्लाई हो जाता है और उसमें कुछ ऐड किया जाए तो मीन में भी ऐड हो जाता है। सही है। तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, 50 इक्वल्स टू a प्लस b टाइम्स 54। डू यू एग्री विद दिस? बट वेरिएंस में क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ y जो है वो एडिशन से इम्पैक्ट नहीं होगा। वेरिएंस ऑफ y में क्या बनेगा, सिर्फ b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x बनेगा। I'll get an equation that says 100 equals to b square into 144. B square equals to 100 divided by 144. B equals to 10 over 12, which is 5 over 6. And I plug in 5 over 6 here, I get the value. 54 की जगह लगाना। इधर हमें शुरू की एक्सपेक्टेशन और बाद की एक्सपेक्टेशन दी हुई थी, तो बस हमें ये निकालना है कि डिफरेंस हमने हमने एक्सपेक्टेशन। काम क्या किया था कि मैं जो है वो ये मार्क्स में एडजस्टमेंट करके चला गया एक साल स्कूल से, और फिर जो है वो मैंने कोई मेरा डेटा को जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने क्या गड़बड़ की थी। यस, तो मैंने एडजस्टमेंट्स क्या की थी, मैंने ये एडजस्टमेंट्स की थी। आपको पुराने मीन पता है और नए मीन पता है, यानी मैंने पुराने मार्क्स का डेटा छोड़ा था और नए मार्क्स का डेटा छोड़ा था। मैंने जो उस पर फॉर्मूलाज लगाए थे वो मैंने इरेज कर दिए थे। ओके, ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। ये चैप्टर जो है वो आगे कंफ्यूजिंग होता जाएगा इफ आई कंटिन्यू। So I will see you in the next class, which will hopefully be face to face. We'll see what we can do on Friday. Okay. नहीं सर, अभी फ्राइडे मुझे पता है बट फ्राइडे को मैं देख लूंगा कि मुझे क्या कराना है। ओके। और थर्सडे भी तो होती है क्लास। बेटा थर्सडे तो इलेक्शन डे, इट्स ऑफिशियली ऑफ एंड अच्छा। probably going to be very low इंटरनेट कनेक्शन। फ्राइडे को नहीं है, ऑनलाइन है। और थर्सडे को भी ऑफ। क्या, सॉरी? हाँ, सैटरडे को हमारी क्लास होती है ना, तो साइड मुझे हमारी फ्राइडे
किया सैटरडे से ज्वाइन। ओके चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।